आगे के जंगल विलेज गया, उसको भी 1 किलोमीटर गया। आगे का पैच भी खराब रोड है, पूरा कच्चा रोड है। मोनेस्ट्री यही है क्या? यही है, बंद है કારણ કે રોડ નું છે ને મને ડાઉટ લાગે છે। શું કરી અહીંયા જ રોકાઈ જવી બહુ યાર, બીજું કોઈ ઓપ્શન નથી આપણી પાસે। राइट नाउ इट्स -6। आई एम फीलिंग वेरी वेरी अनकंफर्टेबल। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सप्लोर द माइलस्टोन्स। हम लोग हैं हमारी मुंबई टू स्पीति वाली रोड ट्रिप पे। और प्रीवियस व्लॉग्स में आपने देखा होगा कि हम थे टाबू में। हमने देखा टाबू मोनेस्ट्री, टाबू के केव्स, और टाबू से 4 किलोमीटर दूर हम जाके देखा गुरु पद्म संभव जी का स्टैचू। और फिर हम लोग निकल पड़े धनकर मोनेस्ट्री के लिए। फिर ऑन द वे इतने खूबसूरत हमने लैंडस्केप्स देखे, निडल रॉक माउंटेन देखे, और अंदीप गांव के पास खूबसूरत से स्पीति वैली के पास ये ब्रिज देखा। वहाँ पर थोड़ा सा हॉल्ट लेने के बाद, छोटा सा फोटोशूट करने के बाद, अब चलो चलते हैं धनकर मोनेस्ट्री। वाव, यार जितना जितना आगे जाते जा रहे हैं ना, अलग 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 थोड़ा थोड़ा टाइम में अलग अलग लुक्स आ रहे हैं, अलग अलग माउंटेन आ रहे हैं, अलग अलग लैंडस्केप्स आ रहे हैं। दिमाग काम नहीं कर रहा है यहाँ पे यार, आपका दिमाग घूम जाएगा इतना अलग अलग सब देख के। दूसरा ફેન્ટમ ફેસ क्या છે? अरे गई हुई तुम्हारे का बोलो जो गोड़ा तो नहीं जा तू। ओ भाई साहब, ये देखो यार, स्ट्रक्चर तो देखो। जो यार, माय गॉड, लुक एट दिस माउंटेन्स, दीज आर निडल रॉक माउंटेन्स। उनका डिजाइन देखो यार, देखो समझ में ही नहीं आ रहा है। टेक्सचर देखो। अरे नीचे रिवर क्यों स्ट्रक्चर है, कोई दूसरी दुनिया में आने तो लग रहा है। नीचे वाला ये वाला नहीं है, आ वाला देखो पीछे का आ वाला। ये रास्ता बहुत खराब है। हम जो रिवर पॉइंट के बाद आए थे, टाबू के बाद, टाबू टू बागाटो रोड में जो रिवर पॉइंट आता है, उसके बाद निडल रॉक आता है माउंटेन, उसके बाद का ये रोड बहुत खराब है। આમાં હોમ સ્ટે ઇન્સ્ટાગ્રામ થી અહીંયા છે। હા, માના યોગમાં गुड लगे। हाँ शांति।
हाँ धनकर मोनेस्ट्री 9 किलोमीटर फ्रॉम हियर और 25 मिनट दिखा रहा है क्योंकि रोड ऐसा ही है खराब। नीडल ड्रॉप जगह थे देखो ना मोटा मोटा नीडल ड्रॉप किया उधर। यार ये रोड की वजह से तुम लोग बहुत लेट होने वाले हैं। रोड ने फंसा दिया आदमी को। बहुत गंदा फंसा है नहीं तो हम लोग तो हॉट पॉइंट पे ही यार टाइम पास कर लेते इतना टाइम कोई जरूरत नहीं है ये मतलब इधर आने का। जी यार रोड इतना ख़राब है ना बहुत रोड लेट हो जाएगा हम लोग को। यहाँ से काजा है 25-27 किलोमीटर कुछ और धनकर है कुछ 9 किलोमीटर जो 25 मिनट दिखा रहा है 27 मिनट। रोड इतना ख़राब है लेकिन हाँ हमको लगा रोड अच्छा रहेगा तो वही हिसाब से थोड़े से हम निकले थे। नहीं तो हम लास्ट पॉइंट पे अच्छा टाइम पास करके डायरेक्टली काजा ही चले जाते। लेकिन अभी वो जो हट विलेज वाला पॉइंट था वो भी गया। पूरा व्यू चेंज हर एक 5-5 मिनट में व्यू चेंज होता है। सामने वाला माउंटेन जो वो वाइट कलर वाला ऐसा लग रहा है सैंड का माउंटेन है। रिटर्निंग टू नाको टाबो તાબો 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 પાછા ધનકા જઈને આયા ધનકર જઈને રોડ કેવો છે ધનકાનો રોડ સ્ટીપ છે તમે અત્યારે જશો હા હું ઈ જ વિચારી છે નહીં જઈ શકીએ જઈ તો શકશો રિટર્નમાં તમારે અંધારું નડશે અચ્છા અંધારું નડશે પણ રોડ કેવો છે આ સિમેન્ટેડ છે કે કયો રોડ સારો છે હા. કોઈ ડામરનો જ છે હા. બટ સ્ટીપ છે એકદમ સ્ટીપ છે લગભગ 15 કિલોમીટર જેટલો 15 કિલોમીટરમાં આરામથી તમારે પોતે અડધો કલાક થઈ જશે અચ્છા એવું છે રસ્તા અચ્છા સારા છે મોસ્ટલી સારા 90% પણ આ રોડ તો બહુ ખરાબ છે અત્યારે ખરાબ છે. તો આજે આગળ ક્યાં સુધી છે હજી આગળ તમારે બીજું 10 થી 15 મિનિટ આગળ જશો પછી બે ફાટા પડશે હા રાઈટ સાઈડ ઉપરની સાઈડ ધનકા જવાશે અચ્છા એવી રીતે છે તમે પાછા આવવાના નહીં પાછા નહીં અમે લોકો પછી કાજા 3-4 ડેઝ હા કાજા જ રહીશું ત્યાંથી કોકને પૂછી લોજો ધનકાથી સીધો પછી રસ્તો એક બીજો જાય છે જે કાઝા સુધી જતો અચ્છા ઉતરે છે કાજાથી છે લગભગ તો છે અમને નથી ખબર અચ્છા. એ લોકો કહે છે ઓકે બરાબર ચાલશે બરાબર ને ઓકે ચાલશે બ્રધર બાય Bye. બાય ले आए गुजरात ये सामने वाला भी गुजरात ની ગાડી अच्छा આની સાથે જ છે આ લોકો हे भगवान मरी गया जाएगा कि नहीं શું કરવું છે જવું છે કે ધનકાર કે પછી ડાયરેક્ટ કાઝા જવું છે સી જોઈએ નહીં તો પછી અહીંયા સ્પેન્ડ કરી દઈએ ટાઈમ એને મને બી થાય છે કે ધનકર થશે નહીં આપણું આ જો લેફ્ટમાં કેટલું મસ્ત છે યાર અત્યારે 4:15 વાગે છે 4:10 થઈ ગઈ રોડ મળી જાય તો ઉડાવી દઈશ ગાડીને એકદમ નીચે આપણે રિવર લેવલ પર આવી ગયા છે ચિરાગ એટલે આ બી હજી ઊંચાઈ ઉપર જ છે હા પણ પણ રિવર ના જો આ લોકો બી ઉતરે અહીંયા જો રિવર પાસે સામે હાલો હમણાં તો આપણે ટાઈમ નથી પણ આપણે કાઝા બી પાછું અહીંયાથી 1 કલાક છે હા તો 4 જ વાગે છે 4:15 જો હરિયાણા અને એ હવે રોડ સારો આવ્યો બોલે કીધું તું ને 1 કિલોમીટર છે ઈ ના ના માલે એવું ચાલુ થાય ત્યાં સુધી વયું જાય શિચલિંગ એ વ્યૂ જો सो अभी शिचलिंग गांव गया अब यहाँ से आगे थोड़ा सा आगे डाइवर्जन आएगा धनकर मोनेस्ट्री के लिए सो अभी 4:15 बज रहे हैं और शिचलिंग पहुँच गए हम लोग। अभी यहाँ से आगे 1 किलोमीटर दूरी डाइवर्जन है धनकर मोनेस्ट्री के लिए। उसके अंदर भी आई गेस 10-12 किलोमीटर है ना कितना किलोमीटर है तो आधा घंटा लग सकता है लेफ्ट। तो हम सोच रहे हैं कि अभी क्या करें क्योंकि अंधेरा यहाँ पे जल्दी होता है 5 बजे से अंधेरा शुरू हो जाएगा। अभी हम चढ़ेंगे तब तक 4:45 हो जाएंगे 4:45 तो रिटर्न में मतलब अंधेरा मिलेगा। और वहाँ पे चढ़ाई स्टीप है वैसा वो दूसरे बोल रहे थे गुजरात से जो आए थे वो। तो हम सोच रहे हैं कि क्या करें जाना है कि नहीं जाना है कि डायरेक्टली काजा जाना है कि यहाँ पे रास्ते में ही टाइम पास करते करते डायरेक्टली काजा जाए और धनकर कल कर रहे हैं। बहुत
रॉक। लेट्स सी, पहले पहुंच के तो देखते हैं यार क्या प्लान है, क्योंकि मेरे को भी अभी समझ में नहीं आ रहा कि पूरा प्लानिंग बिगड़ गया है। इतनी देखने के लिए जगह है ना, आप अपना प्लानिंग मतलब प्लान करके आओगे तो इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि फिर अगर तो आप जगह मिस कर दोगे अगर प्लान के हिसाब से जाओगे तो। बट नहीं बने, क्योंकि रोड भी सपोर्ट यहाँ पे देखो पूरे रिवर के लिए रोड जा रहा मैच हो पा रहा है। है और बीच बीच में इतने ऐसे लोकेशंस हैं, मतलब अगर हम सोचते हैं कि हाँ आज नाको से टाबो जाएंगे, टाबो से काजा जाएंगे तो जा सकते हो, लेकिन बीच में इतने सारे लैंडस्केप्स इतने मस्त आते हैं ना कि वो देख के छोड़ के जाने का मन नहीं करता, इसलिए लेट होता है पहुंचने में। શું કરું છું, ચડાવું કે रोड एक बार જોઈ લો, રોડ સારો છે, ઓલા કીધું ને ચડાવી દઉં। 4:15 તો વાગે છે, ચલો ને ये પછી ફોટા વોટા બધી સારા આવશે। ત્યાં તો હશે જ। देखो अब ये लेफ्ट जाता है काजा और ये ऊपर जाता है धंकार मोनेस्ट्री के लिए। वाह रोड तो सारो છે, ચલો કાદા જવાનું છે તો ઈ રસ્તો કેમ ન પકડો? અહીંયા જોઈ આવશું મોનેસ્ટ્રી, પછી રિટર્નમાં કાજા જશું। શું કહે છે કે આવો જ રોડ છે તો જોયો પેલા થોડો 1 કિલોમીટર જો ને તો પછી बाप रे, स्टार्टिंग में रोड अच्छा है, फिर वापस ऐसा कैसे ही आ गया। છે રોડ તો ઉપર સારો દેખાય છે, હા જોલા જેવો જ લાગે છે। સ્ટાર્ટિંગ માં સ્પેચ આવું લાગે છે। પેમા હાઉસ, જો આ પેમા હાઉસ છે, જો ઓલામાં ये આવતું रिवर પેલા क्रॉसिंग છે એટલે અહીંયા રોડ નથી બનાવવા લોકો, નહીં તો અહીંયા પેમા હાઉસમાં રોકાઈ જશે બાબા, કોઈ ટેન્શન નથી। હા વધારે કઈ મચાન થઈ। અચ્છા આ રોડ બી છે, ડાયરેક્ટ ઓલા રોડ ને મળે છે। એ તો અહીંયાથી જ મળે છે, આ કઈ ઓટલું બી થોડી છે કઈ। ચાલો સારો રોડ લાગે છે, આજા ટ્રક કાદા ના ટ્રાવેલર પેમા હાઉસ રોકાણી છે ટ્રક રાઈટ। ગઈ રોડ ઉપર। હા જો યદી દેખા જો પણ કાચો રોડ છે બહુ જ। અજો યદી દેખાય જો 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 હા સાથે રોડ સારું છે। એ યદી પર કનેક્ટ થાય છે કાદા માં જગા પર બ્લુ ને ફર્સ્ટ હિમાચલ માટે અહીંયા આવ્યો તો ત્યારે બહુ જ એક્સાઇટેડ છે। હું आज एक्साइटेड નથી કારણ કે ઓલરેडी જયા भी ये देखो मोनेस्ट्री का ऊपर ऑलमोस्ट हम लोग आ गए हैं, 900 मीटर बाकी है और ये जो 1 किलोमीटर का पैच है वो खराब है, बाकी पूरा रोड नीचे से बहुत अच्छा था, उससे लास्ट वाला एक पैच खराब है, આ क्या थोड़ा कच्चा रोड है। क्या છે મોનેસ્ટ્રી इधर तो लोग વોટ યુ હેવ અરાઇવડ આગળ હશે અહીંયાથી, એટલે દેખાય છે ને ત્યાં। ये देखो ये जो आता है वो ड्राइवर ने बताया था कि ये बुद्धा का कुछ स्टेच्यू या तो ऐसा हाँ। कुछ है, तो उसको सब रिस्पेक्ट देके सब लेफ्ट यहाँ साइड से ही लेफ्ट जाना साइड से है। जाते हैं, वहाँ से आने के टाइम राइट वो भी लेफ्ट साइड से ही जाते हैं। वो मोनेस्ट्री ओली છે આગળ જો પેલું ઓલો જો બાઇક વાળો બી આગળ જાય છે ને ત્યાંથી તમે તો ધનકર મોનેસ્ટ્રી નથી લખ્યું? લખ્યું છે ધનકર મોનેસ્ટ્રી। અરે ચડવાનું છે ઉપર મારા ખ્યાલથી। હા હા આયરું ધનકરમાં left. ચડવાનું છે। ये देखो धनकर विलेज दिख रहा है सामने। ભયંકર મોને છે મોનેસ્ટ્રી મને બી નથી દેખાતી, એકચ્યુઅલી આ ટાઈમે જોઈને નીકળી જવું છે તો આપણે ફટાફટ 10 મિનિટમાં ખતમ કરી દેવાય। ઓય જો મોનેસ્ટ્રી ઓલી લાગે છે। ઠેકાણા નથી યાર। નહીં ઓલી ઉપર છે ચડવાનું છે મારા ખ્યાલથી, મને ધ્યાનમાં આવ્યું। અને ઉપરથી બધા વ્યૂ બધા ચડા ઉપર નીચે બહુ કરે છે બધા। ये जो नीचे हम देख रहे थे ना नीडल रॉक माउंटेन, ये देखो पूरा सामने नीडल रॉक माउंटेन पे ही पूरा धनकर विलेज है सामने। यार मैप में तो आ गया कि धनकर विलेज गया, उसको भी 1 किलोमीटर गया, तो आगे का पैच भी खराब रोड है, पूरा कच्चा रोड है। गेट देखा है क्या आपको गाड़ी? You can see the gate, बढ़िया रोड।
આવી ગઈ. આ રહી પાર્કિંગ. પૂછ તો જરા ક્યાંથી જવાનું છે. આવી રહ્યું છે ને અંદર આવી રહ્યું. મોનેસ્ટ્રી આ છે? હા, આ મોનેસ્ટ્રી રહ્યું. નહીં હોય. તો શું છે આ? જરા પૂછ, આ મોનેસ્ટ્રી નથી. तो स्कूल लग रहा है. बोर्ड भी नहीं मारा यार. सब कुछ बंद बंद है. कोई है भी नहीं बड़ा पूछने के लिए. बच्चों, मोनेस्ट्री यही है क्या? यही है, बंद है. पुराना कहाँ है? कहाँ है पुराना? कहाँ से जाना है? रोड रास्ता जाता है वहाँ पे. वो जो सामने दिख रहा है वो है, वो पुराना वाला है. कितना दूर है यहाँ से पता है? ये नया वाला ढंकर मोनेस्ट्री है. गाड़ी तो गाड़ी यहाँ से जाते हैं. यहाँ से जाते हैं, यहाँ से 20 किलोमीटर होगा. ओके, वो सामने दिख रहा है वो है क्या? अच्छा, ठीक है. थैंक यू. ये नया वाला है, पुराना वाला आगे है 1 किलोमीटर. और यार जल्दी जाते हैं, अंधेरा होने को आ गया. सामने व्यू बहुत अच्छा है और ठंड लग रही है यार. चलो आगे रोड तो है. थक गए चलते चलते. हाँ, तो ये रूम्स अवेलेबल है क्या चाहिए आज के लिए? हो जाएगा सर. कितना रहेगा? कितने रूम चाहिए? एक ही रूम चाहिए. इंक्लूडेड मील चाहिए कि रूम ओनली? मील तो मतलब लगेगा ही फिर अभी. हम तो बोलते हैं एमएपी में देते हैं, रूम ओनली यूपी में देते हैं. अच्छा, तो अभी कहाँ पे आप? मैं अभी आप कहाँ पे? अभी धनकर, सुनो मैं धनकर में हूँ अभी. तो अभी हमारा मोनेस्ट्री देखना बाकी है, तो शायद लेट हो जाएगा, तो यहीं रुके या तो फिर यहाँ से काजा जाए मोनेस्ट्री देखने के बाद. आ जाइए, यही शाम है. तो कौन से मोनेस्ट्री में आप? न्यू मोनेस्ट्री में. न्यू मोनेस्ट्री से ओल्ड मोनेस्ट्री जाते हुए किसी रोड के साथ ही है. अच्छा, तो आपको रोड से लेफ्ट साइड में दिख जाएगा. अच्छा, और क्या आपका है टैरिफ क्या है? टैरिफ सर 1500 रुपीज जाएगा रूम ओनली. खाली रूम? हाँ जी. अच्छा अच्छा. तो यहाँ से अपना जो मोनेस्ट्री मेन है वो कितना दूर है? वहाँ से 200 मीटर आना पड़ेगा. वहाँ आ जाओ, वहाँ के वहीं से आ जाओ. चलो चलो आता हूँ मैं आगे. ठीक है, ये फिर ऑन द वे मिलेगा मेरा होटल लेफ्ट साइड में. चलेगा. ठीक है. આ ન્યૂ મોનેસ્ટ્રી છે. अच्छा, નવી છે, આ બંધ છે અત્યારે અને ઓલ્ડ મોનેસ્ટ્રી આગળ છે. કોઈની સામે છે ને એ ઓલ્ડ છે. આ જો હોટલ કઈ હતી ચિંકુ? બંકર હાઇટ્સ ડંકર હાઇટ્સ. શું કરી અહીંયા જ રોકાઈ છે પીપો? જોઈએ યાર. મારા ખ્યાલથી તો યાર બીજું કોઈ ઓપ્શન નથી આપણી પાસે. કારણ કે રાત્રે આ ઉતરવું નથી ને પાછું ત્યાંથી 1 કલાકની રોડની જો બાકી પથ્થર ઠોકાઈ ગઈ છે યાર. ને કાલે હોટલમાં ડમ્પ કરીને બધું સીધું પછી આપણે છે ને 2-4 પોઈન્ટ જોઈ લઈશું ટાક ટાક ટાક. એટલે કાલનું બી પોઈન્ટ આપણું બગડશે નહીં દિવસ. तो काजा क्या करा दिवस? કાલે જ જશું, બીજું શું કરીએ. અત્યારે તો આઈ ડાઉટ કે થઈ શકશે કાંઈ. કારણ કે રોડનું છે ને મને ડાઉટ લાગે છે. જો ભાઈ રોડ જો અહીંયા નેરો છે, સંભાળીને જો. तो क्यों ना कॉपी? એ वो क्यों? કુટર કુટર ચાલે છે, કુટર કુટર. ઓલ્ડ મોનેસ્ટ્રી સીધું કાઝલ રાઈટ. અચ્છા, જો આ કાઝાનું રાઈટ છે. ક્યાં છે અહીંયા? શિવલિંગ નીચે. ઉભા રહો, ઉભા રહો, ઉભા રહો. ત્યાં તો રોડ કેટલો સારો છે. ક્યાંથી જવાનું છે તો પછી? અચ્છા, ઓલ્ડ ધનકર માટે નીચેથી જવાનું છે ને કાઝા માટે ઓલ્ડ ફોર્ટ અપસ્ટેર્સ અહીંયાથી જવાનું છે. ઓલ્ડ ફોર્ટ માટે કાઝા રાઈટ થી છે ને ઓલ્ડ માટે નીચેથી જવાનું છે. અહીંયા લખ્યું છે જો. શું કીધું ઓલે આંટીએ? ઠીક है, रस्ता तो ठीक है. खास आपको नीचे मिलेगा ही મને સમજ પણ નથી આવતી યાર. છે ને આ બધી ઇનોવા ગઈ છે જો. ત્યાં ધાબો છે, પિઝાનો ફોટો છે ત્યાં.
અરે ઈ ઠીક છે કાઝાવાળો રોડ કહું છું કાઝાવાળો રોડ જઈ છે અહીં ઓ જીમની વિમની બધી ઊભી છે ત્યાં हाँ मैं जाते જોઈ લીધી ગ્રીન કલરની જીપી ઓહો ચાલુ છે કે બંધ છે ધ ડ્રેગન કેફે ડંકર ડંકર પીઝા જો પીઝા ખાવા મની રંગ નીચેથી છે મને ડોમિનોઝ ના ખાવા છે ખુલ્લું છે કે બંધ છે એ બાકી ताशी होम स्टे एंड कैफे वो तो बंद है यार ये देखो पूरा नीचे से काजा दिख रहा है अरे काजा क्या डंकर दिख रहा है इनोवा इज गोइंग बैक ये लोग भी इतने लेट जा रहे हैं रिटर्न અરે एक और इनोवा आ रही है ઇનોવા નથી કઈ છે અર્ટિગા છે ढंकर हाइट्स आई रही सामे ब्लू कलर वाला बोर्ड देखो नीचे पूरा ढंकर दिख रहा है और रास्ता देखो पूरा पूरे लूप्स दिख रहे हैं आई रही ढंकर हाइट्स पांडाનો ફોટો છે જો બધા સ્ટીકર ચિપકાડ્યા છે આને आई रही ओह सो दोस्तों फाइनली इतने एफर्ट्स के बाद हम लोग धनकर पहुंच गए लेकिन अब लेट हो चुका था शाम हो चुकी है ऑनेस्टली खुला होगा बंद होगा कुछ पता नहीं है हमारा इतने एफर्ट्स बढ़ जाएंगे या वेस्ट जाएगा यहाँ पर टाइम हम काजा जाएंगे या यहाँ रुकेंगे कुछ पता नहीं है सो फॉर दैट यू नीड टू चेक आउट आवर नेक्स्ट व्लॉग टिल देन बाय बाय सी या ये बाहर से कड़ी किसने मारा है दो चीज़ में कंफ्यूज है कि नए रूट से जाएं जो यहाँ से दिखाता है उसमें 7 किलोमीटर कम पड़ेगा या तो फिर जिस रास्ते से हम आए उसी रास्ते से नीचे उतरे अब समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि ये रोड थोड़ा सा ख़राब दिख रहा है ज़्यादा ही और स्टीप भी है और ये जो स्टार्ट हुआ है शिकलिंग से रोड ख़राब